सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का था वहाँ हमने एपिस्टैक्सिस तक पढ़ लिया था। सो एपिस्टैक्सिस वाज द ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, है ना। यूनिलेटरल एंड बायलेटरल ट्रीटमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया था। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट अफेक्शन, दैट इज़ राइनोरेजिया। So rhinorrhea, epistaxis was the bleeding from the nose, and rhinorrhea is when the large amount of bleeding occurs from the nose. So rhinorrhea, it is common in horses. The next is hemoptysis. Hemoptysis, it is bleeding from the lungs. Next is hematemesis. और ये जो लंग्स से ब्लीडिंग होता है ना, यही आता है स्प्यूटम में इन हेमोप्टाइसिस। हेमेटमेसिस, इट इज़ ब्लीडिंग फ्रॉम स्टमक। बात करें कि हेमेटमेसिस है या हेमोप्टाइसिस है, सो ये जो हेमोप्टाइसिस है, pH विल बी अल्कलाइन, and hematemesis, the pH is acidic। इसी से हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। Now another affection is rhinitis. Rhinitis is the inflammation of nasal mucosa. राइनाइटिस का एक स्पेशल टाइप है, दैट इज़ एलर्जिक राइनाइटिस। सो व्हाट इज़ एलर्जिक राइनाइटिस? तो ये दो तरीके हैं, इसमें दो आपको याद रखना है कि इन कैटल्स एक एलर्जिक राइनाइटिस है जिसको बोलते हैं समर स्नफल, और पिग में इसी चीज़ को बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी राइनाइटिस इन पिग्स। तो ये आपको याद रखना है कि एलर्जिक राइनाइटिस को कैटल में क्या बोलते हैं, पिग में क्या बोलते हैं। द नेक्स्ट इज कफिंग। व्हाट इज कफिंग? इट इज एक्सपल्सिव expiration of air from the lungs. Another is cyanosis. What is cyanosis? It is the bluish discoloration of mucous membrane occurs generally when there is fall in the hemoglobin and blood. Deficiency of hemoglobin leads to the cyanosis. So it occurs in all type of anoxia. This must be remembered that cyanosis occur in all type of anoxia except anemic एनॉक्सिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ना, कि साइनोसिस अकर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ एनॉक्सिया एक्सेप्ट अनीमिक एनॉक्सिया। सो नेक्स्ट इज एनॉक्सिया और हाइपोक्सिया। इट इज एब्सेंस। एनॉक्सिया मीन्स एब्सेंस, हाइपोक्सिया मीन्स decrease in
oxygen level in tissues. There is histotoxic anoxia. Histotoxic anoxia is seen in cyanide poisoning. There is anoxic anoxia. So the anoxic anoxia is seen in pneumonia and pulmonary congestion. So coming to the pneumonia. Pneumonia, it is inflammation of lung parenchyma. Inflammation of lungs is called as pneumonitis. ओरिजिन की बात करें निमोनिया का, तो ये ओरिजिन में भी ब्रोंकोजेनिक एंड लोब्यूलर. तो एनिमल्स की बात करें, so the animals, the bronchogenic and lobular pneumonia are most common. यहाँ पे इंटरस्टिशियल थोड़ा कम होता है. So the interstitial pneumonia is not very common. Now coming to the classification, first is bronchogenic. ब्रोंकोजेनिक का ही दूसरा नाम है लोब्यूलर या बैक्टीरियल या मोस्ट निमोनिया. नाउ इसमें होता क्या है, देयर इज मॉइस्ट रेल्स, इंक्रीज इन न्यूट्रोफिल, second one is interstitial. Interstitial is also called viral या lobar pneumonia. It was lobular, this one is lobar और dry pneumonia. सारे नाम इम्पोर्टेंट हैं. इंटरस्टिशियल के साथ लोबर है या लोब्यूलर है, तो बैक्टीरियल कौन करेगा, वायरस लोबर करेगा, लोब्यूलर करेगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. So there is dry rails and there is increase in lymphocyte. So there is lymphocytosis. Third one is verminous. Verminous is parasitic pneumonia. So the verminous or parasitic is when there is rattling sound is present. There is presence of moist crepitant sound. Now coming to the next one, that is aspiration pneumonia. So the aspiration pneumonia, it is due to faulty drenching. In aspiration pneumonia, bubbling sound is heard or present. Now another one is mycotic. The name itself suggests that
है ना. The origin must be a fungal. So there is harsh respiratory sound is present. Greenish and greenish or greenish yellow masses are seen in lungs. Now coming to the lung lesion. ये क्लासिफिकेशन इतना ही था. So the lung lesions, firstly अगर granulomatous है, so it is seen in TB or mycotic infections. अगर ये necrotizing है, so it may be due to the spherophorus necrophorum. Spherophorus necrophoris, it is a gram negative bacteria necrophorum, है ना. अनदर इज अगर जो लीजन है अगर फाइब्रस है ये, सो द कॉज में बी CCPP CBPP, क्योंकि आपने इनमें पढ़ा होगा कि देयर इज मार्बलिंग ऑफ लंग्स. ये इम्पोर्टेंट है इनमें भी और इसमें भी, तीनों में. पास्चुरेला multocida. So there is marbling of lungs. या marbling of lungs इन तीनों डिजीज में प्रेजेंट होता है. इम्पोर्टेंट. नाउ निमोनिया के स्टेजेस. So the stages are, first is stage of congestion, another is a stage of red hepatization, another is gray hepatization, and another is a stage of resolution. आपको ज़्यादा इसमें याद नहीं रखना बिकॉज ये पैथो वगैरह में आपने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी. मेडिसिन में बस इतना याद रखना है कि ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ कंजेशन, ये क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ कंजेशन लंग फ्लोट ऑन वाटर, एंड रेड हिपेटाइजेशन, ग्रे हिपेटाइजेशन, रिजोल्यूशन, इन सब में लंग सिंक्स इन वाटर. ये आपको याद रखना है. हेल्दी लंग साउंड या नॉर्मल लंग साउंड जो होता है, इट इज रेजोनेंट. इट इज रेजोनेंट साउंड. एब नॉर्मल लंग साउंड की बात करते हैं. ये पूरा इम्पोर्टेंट होगा, है ना. पूरा एब नॉर्मल लंग साउंड जितने भी अपन बात करेंगे. फर्स्ट इज हाइपर रेजोनेंट साउंड. तो हाइपर रेजोनेंट साउंड ये कब होता है? ड्यू टू एक्सेस एयर, और इट इज इन द केस ऑफ निमोनिया एंड एम्फाइसीमा. Another is tympanic या drum like. So it is heard in pneumothorax. Next is the dull sound. So the dull long sound is heard in pleural effusion. Hydrothorax
abscess. Another is pleural rub या frictional sound. So it is heard in condition pleurisy. Now the important one, that is dry sound, also called as stridor. So the stridor is heard in the stenosis of trachea. Stenosis मतलब narrow trachea. Another is splashing sound. So the splashing sound is heard in hydropneumothorax. Now another is bronchi. What is bronchi? So it is dry, continuous sound due to narrowing of bronchi. The increased pitch bronchi is called as wheezes. So wheezes are increased pitch bronchi, और ये wheezes are heard in asthma या asthma, जो भी आप पढ़ते हो. Coming to the moist trail. Bronchopneumonia, and pulmonary edema. इनमें moist trail देखने को मिलेगा, सुनने को. Coming to the crepitating sound, इसी को बोलते हैं rails. Crepitating sound is heard in lobar pneumonia. तो यहाँ पे सारे साउंड्स ख़त्म हो गए. एक लास्ट पॉइंट जो बच गया है हमारे पास, दैट इज स्पाइरोमेट्री. It is done to detect the respiratory volumes and vital capacity of lung. The instrument we use in spirometry is called a spirometer. तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे ख़त्म होता है. नेक्स्ट जो ऑर्गन सिस्टम होगा उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी. हैव अ नाइस डे. ऑल द बेस्ट.